So, I have given you a fair idea about cerebrum last time. There will be a separate lecture on cerebrum, white fibers. Rather, Hannah Madam is going to take lecture today. I will just as a duty, what I do is, I orient you to the topic. Is the voice clear? And so today I am going to orient you to another topic, and that is cerebellum. Cerebellum is present below the tentorium cerebelli, in the posterior cranial fossa, below the cerebrum. Okay, that's where cerebellum is present. Now what I am going to do for you, the cerebellum has a superior surface and inferior surface. Now I am going to cut from anterior aspect, open the cerebellum like this, and we now look from this view. So when I am looking from this view, what I see is this is the superior surface, opened it. This is the inferior surface, superior surface and inferior surface. Okay, you understood? Like cerebrum is connected, the two hemispheres. Here also there are two hemispheres, which you are not able to see right now. They appear to be continuous, not like cerebrum. They appear to be continuous superiorly, but inferiorly you distinctly see a worm-like structure. You distinctly see a worm-like structure, and that worm-like structure is vermis. Pause kar. Like cerebrum is two hemispheres are joined to each other by corpus callosum. This is joined by vermis. This vermis is not seen superiorly. It gets buried. तो ये ऐसा नहीं दिखता है superior surface पे. Inferior surface, you can actually see the two hemispheres and you can see the vermis. Some of you must have seen the cerebellum. This vermis has following parts. L, C, C, D, F, T, P, TP तो आपको मालूम है TP, U and N, U and N. Now this fissure here in between, which is dividing superior and inferior surface, is the horizontal fissure. This is horizontal fissure. Horizontal fissure is as useless as India-Bangladesh border. There were beggars outside gate number 1 to take a turn, family stay on the footpath. So as I was going there, one mother was shouting at her child, "ज़्यादा शोर मचाया तो ढाका भेज दूंगी वापस."
I was looking at Bapre. So, it is as useless. So why useless? Because it doesn't divide cerebellum into any functional components. It doesn't divide cerebellum into any functional area, just superior and inferior surface. So what are those two important fissures which divide cerebellum into three lobes? And the first amongst them is primary fissure called as fissura prima. पुस्तक देगा माझ्याकडे उघडून दे cerebellum. Fissura prima. आपको मालूम है क्या इसके बारे में? क्रॉस सेक्शन होगा. And then here there is one area called as flocculus. What's the hell? हे फ्लॉक्युलस काढलं तुझं लक्ष होतं का? इकडे हे फ्लॉक्युलस. Where is flocculus? Okay, flocculus. And here is one more fissure called as posterior lateral fissure. So basically we have two important fissures, fissura prima or primary fissure and posterior lateral fissure. Okay, two important fissures which divide the cerebellum into anterior lobe, हा अख्खा अखंड middle lobe and flocculonodular lobe. So this morphologically cerebellum has anterior lobe, middle lobe and flocculonodular lobe. But functionally, now let us talk about functionally. Functionally, cerebellum has three parts. So morphologically, three lobes. But that is morphologically, anatomically, three lobes. Functionally, आपको मालूम है क्या ये भी? स्नेहल मालूम है? तुमको मालूम नहीं, मुझे मालूम है. बहुत बड़बड़ कर रहे थे ना तुम. So L starts for lingula. N starts for nodule. F starts for flocculus. Archicerebellum. आता बोलू नका मध्ये प्लीज. Archicerebellum और vestibulocerebellum. ये तुम्हें ऐसे बोलने लगे ना मजे आते कि ऐसा मेरे को लगता है कि वो ड्रामा में सबसे जो छोटे बच्चे काम करते हैं ना, और उधर से टीचर बोलते हैं हाँ तुम्हारा विलन बोलो, मैं तुमको हे अर्जुन धनुष उठा युद्ध करो, हे अर्जुन धनुष उठा क्या नाम है तुम्हारा? Archicerebellum or vestibulocerebellum. This includes L plus N or L plus flocculonodular lobe.
खाली ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, इतना ही। आर्ची सेरेबेलम और वेस्टिबुलो सेरेबेलम, दिस इज कंसर्न with balance. It is connected to the vestibular apparatus of the ear. That means cerebellum, which has three functions, and the first function is balance. So if cerebellum is damaged, balance is gone. The next one is spinocerebellum, paliocerebellum और spinocerebellum. पैलियो, फिएट का एक एडिशन आया था पैलियो करके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एवर नो दिस, मालूम है क्या आपको फिएट पैलियो? ओके, फिएट आर्ची मालूम है? आर्ची जो पुराना टैक्सी आता था, प्रीमियर पद्मिनी, चलो बाबा नो प्रीमियर पद्मिनी मालूम नहीं तुम लोग को? हमारा जिंदगी गया उसमें। वो इधर टैक्सी, अभी भी एक खाद आपको टैक्सी दिखता है ऐसा लंबा वाला, एम्बेसडर मालूम है क्या? तुम्ही तो क्या लस कळलं आम्हाला, तुम्ही काय आहात? Spinocerebellum, paliocerebellum is made up of anterior lobe माइनस लिंग्यूला, बरोबर है ना? क्योंकि लिंग्यूला इधर गया है ना ऑलरेडी। एंटीरियर लोब माइनस लिंग्यूला प्लस पिरामिड एंड यूला ऑफ मिडल लोब, plus pyramid and uvula of middle lobe. Pyramid and uvula of middle. Here, P is for pyramid, U is for uvula. Uvula. Okay? Good. ए, पांढरा शर्ट घातला मग तुला काय वाटतं? मला कळत नाही की तो एप्रन नाही घातला. डिजाइन उस पे क्या डिजाइनर एप्रन पहना क्या? Okay. This spinocerebellum is concerned with tone and posture. समझे? पैलियोसेरेबेलम और स्पाइनोसेरेबेलम. Now remaining क्या है? Is neocerebellum. नियो, इसके लिए मैंने नियॉन कलर ऐसा बोलते हैं, वन ऑफ नियोसेरेबेलम. और अनदर नेम फॉर दिस इज पॉन्टोसेरेबेलम. नियोसेरेबेलम और पॉन्टोसेरेबेलम. हाँ, इट इज मिडल लोब. नार्वेकर मिडल लोब माइनस pyramid and uvula, because that is in, and this is for fine movements. This is for fine movements. Clear? That means cerebellum has three functions: balance, tone and posture, fine movements. Involved in fine movements, of course. The movements are caused mainly by the cerebrum. Yeah, cerebellum coordinates it. Now, cerebellum. So this is clear. अभी आपका थोड़ा सा मिजरी बढ़ाता हूं मैं.
ये जो बाजू के एरियाज है ना, सॉरी, जैसे ये सी के बाजू में यहाँ पे एक लोब है, एलआर लोब, क्वाड्रेंगुलर, सिंपल लोब्यूल, सुपीरियर सेमिलुनार, इंफीरियर सेमिलुनार, ऐसे इधर नाम, ओके। यहाँ पे है टॉन्सिल, टॉन्सिल, बायवेंट्रल लोब्यूल। ये आपको बाय हार्ट करना है तो करो, इनके भी नाम है कुछ कुछ, लिंगुला, कल्मेन, सेंट्रल लोब्यूल, डिक्लाई, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड्यूला, नोड्यूल। अभी मेरे को 25 साल हो गए ना, मुझे बाय हार्ट है ये सब, आपको सब नहीं याद आया। राधिका तुमने ऐसा कैसा लुक दिया ना इधर, उसके लिए मैं उस पर एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इतना सब याद नहीं हुआ ना दोषी तो भी चलेगा। क्या याद रहना चाहिए? लिंगुला, नोड्यूल, फ्लॉक्यूलस, पिरामिड्यूला, इससे आपका गाड़ी चल जाएगा, ओके। Cerebellum has three peduncles, superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, and inferior cerebellar peduncle. Peduncle, where white fibers are together coming from a specific organ, like we have cerebral peduncle. तो डिजाइनर एप्रन उभा राहा. व्हॉट इज सेरेब्रल पेडन्कल? बाजूचा मुलगा येत नसेल ना पटकन असं बोलायचं. बाजूचा मुलगा, त्याच्या बाजूचा, त्याच्या पुढचा, पुढची बेंच अख्खी. आता मी बेंच ने जातो. सेरेब्रल पेडन्कल उभा राहा. हा हा What is cerebral peduncle? हाँ, वो तो सबको मालूम है, बट आगे क्या? What is the example of this? हाँ तो हाँ पनिश को नहीं, पूरा क्लास अभी चलो. किसी को मालूम है what is cerebral peduncle? चलो ये मेरा सबको मेरे को इधर जाने. चलो इधर किसी को मालूम है सेरेब्रल पेडन्कल? वाह. तांबा. व्हाट इज सेरेब्रल पेडन्कल? Crus cerebri. व्हाट इज सेरेब्रल पेडन्कल? Crus cerebri. क्रस बसा खाली बसा. इंटरनेटवर तुम्ही आता फार फेमस होणार आहे सगळे. मग ये आपको मैं ओनली रीजन आई मेड यू स्टैंड इज क्रस सेरेब्राई is a peduncle coming from cerebrum. It contains all fibers coming from cerebrum going to the lower centers. These three are cerebellar peduncles. So what is cerebral peduncle? Crus cerebral. उसमें corticospinal tract है ना, corticospinal. Okay, so that it has projection fibers. ओके, जो एक मैंने इसके ऊपर आप लोग का दिमाग भी खाया था. क्रस, हु इज योर क्रस? तो आपने सबने बोला था क्रस सेरेब्राई, बट आप भूल गए आप. हाँ चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अभी याद रहोगे. सेरेब्रल पेडन्कल अभी घुस गया ना दिमाग में. डिजाइनर एप्रन, नाम क्या तुम्हारा? जरा बोलायचं. संजय. क्या बात है, नाराज आहे का संजय? ओके, संजय विजन मिळाली ना तुला आता? तू इकडे आहे संजय, जरासा आता हे जरा मदत करणार. लवकर पट. हाँ, तुमने
लोग जो स्पीड में काम करते हैं ना, पेशेंट मर जाएगा तब तक, फटाफट आने को। आप लोग पोछा बोलते हैं। Now till then I will just continue. Superior cerebellar peduncle connects the cerebellum with midbrain areas. Grossly, mainly midbrain. Connects with some spinal cord also. Middle connects it with pons. And inferior cerebellar peduncle connects it with medulla. Of course, medulla and spinal cord. This is midbrain and spinal cord and higher centers. ये सब है. ओके, इन ईच पेडंकल, इसके बाद आप एक चार्ट बनाओगे, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडल सेरेबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरेबेलर, ऐसे एक के एक नीचे एक टेबल बनाओ। चलो, सुपीरियर थोड़ा जगह छोड़ो, मिडल ज़्यादा जगह मत छोड़ो, और इंफीरियर ज़्यादा जगह छोड़ो, 2-3 लाइन छोड़ो। सुपीरियर अबव, फिर मिडल, फिर इंफीरियर। ये आपके फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम। उसका नेक्स्ट कॉलम में लिखो, आज हम तो लाइन मारता है, वो भी खोड़ा तुमने, वो भी रख कर, वो रहने दो। सो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncle. Inferior cerebellar peduncle. There are ascending fibers and there are descending fibers. So not ascending. Afferent fibers and efferent fibers. Afferent means going towards cerebellum, efferent means coming from the cerebellum. Okay? Afferent and efferent. समझे? Let's go to the easiest one. Middle has only afferent, no efferent. चलो, anybody? सब क्लास को खड़ा करने का मेरे बहुत मजा आ रहा है। Anybody? इसके लिए पहले वॉलंटरी पूछ रहा हूँ, नोज। हाँ, पार्टली करेक्ट। काय नाव तुझं? मृणाली. कुठलं गाव? विदर्भ बोलायची काय गरज आहे? तुला सेपरेट विदर्भाची मागणी आहे का तुझी? मग सरनेम? अच्छा. What she said is correct, partially correct. मैंने जब आपको बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स पढ़ाया था ना, बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स, तभी मैंने बताया था कि इट हैज पोंटाइन न्यूक्लियाई. फाइबर्स कम फ्रॉम सेरेब्रम, एंड इन दोस न्यूक्लियाई एंड गो टू ऑपोजिट साइड. सो pontocerebellar is correct, but I would say cortico-pontocerebellar. Okay? What are the fibers there? Cortico means coming from cerebrum. Cortico, ponto, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सेरेबेलर फाइबर्स, कॉर्टिको पॉन्टोसेरेबेलर मतलब सेरेब्रम कडून येतात, पोंटाइन न्यूक्लियर एंड होतात आणि ऑपोजिट साइडला जातात. सो आय वुड ऑल्सो से क्रॉस्ड. हाँ, क्रॉस्ड. तो ये एकदम इजी था, ये हो गया. अभी इसमें इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, यू हैव टू रिमेंबर अ न्यूमोनिक. VOR. What? VOR. Vestibulocerebellar, olivocerebellar, reticulocerebellar.
You have studied all this in brainstem. Vestibulo, that means the vestibular nucleus which is at the junction of pons and medulla. Olive, all of you have seen olive in the prosection. Inferior olivary nucleus. Reticulo, you have not seen this. It is there, reticular formation is there inside the brainstem. Reticulo. So efferent will be cerebello-vestibular, cerebello-olivary, cerebello-reticular. Okay? आपके कोई भी बुक में ना एक ऐसा चार्ट रहता है, एक्सेप्ट फॉर एक कौन सा बुक दे रही है मेरे को, मेरे दोस्त का है, बोलेगा नहीं कुछ. हमने उनको कॉल किया था ना उस दिन. मैं इतना खुश हो गया ना, दैट डे आई सॉ आवर डेमोन्स्ट्रेटर्स रीडिंग विश्राम सिंह फोटोग्राफ्स आने को. तो मैंने सीधा सर को फ़ोन ही कर दिया, मैंने सर देखो आपके बच्चे, हमारे बच्चे सारे आपका ही पढ़ रहे कीजिए. चार्ट शायद आगे पीछे रहेगा, आई एम नॉट श्योर. है चार्ट है. कौन से पेज नंबर पे? हाँ, वो इसमें भी है आगे, बट उसमें वो मुझे तो चार्ट आप देखोगे ना, उसमें भी अच्छे से दिया है. इवन दैट विश्राम सिंह ऑल्सो दे हैव गिवन इन आईबी सिंह, देयर इज अ चार्ट गिवन. देयर आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट. वो तो आपने नाम सुना है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट. सो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट इज हियर एंड एंटीरियर गोज फ्रॉम हियर. एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, posterior and anterior. Okay, clear? So anterior spinocerebellar is going from here, posterior is going from here. Apart from this, there is tectocerebellar. I'm just writing C for cerebellar. Tectocerebellar. Okay, here only these three efferents, here no efferents. Now what about efferents over here? They are going to which part? Midbrain. So cerebello-rubral. What is rubral? Red nucleus. Cerebello-rubral, cerebello-reticular. इतना आपने लिखा तो भी बहुत हो गया. और क्या है? Dentatothalamic, from dentate nucleus to thalamus. Okay? So आपको अगर ये सडनली पूछा, राइट द पेडंकल्स, ज़्यादा घबराने का नहीं. पहले चार्ट बनाओ, पहले मिडल पेडंकल लिखो, पोंटोसेरेबेलर लिखो, फिर इंफीरियर पे जाओ. नहीं देखते रहो बेचारा, तो मोबाइल चालू कर. अजून नको, ते त्याला त्याचं हे तुला कवर आहे, मागच्या बाजूला कवर आहे बघ. ओके, नाउ in the exam when they ask you write the three cerebellar peduncles, पहले देखने का cerebellar या cerebral. What is cerebral peduncle? Cerebellar peduncles are three: superior, middle, inferior. This connects it with midbrain, this connects cerebellum with pons, and this connects with
medulla mainly. Other areas are also there. So when you make a chart, superior, middle, inferior, right ascending fibers, afferent fibers, efferent fibers. Start with middle peduncle. Most easy. It does not have any efferent. It has only afferent, and those fibers are crossed. Cortico-pontocerebellar. वो भी याद नहीं रहा, right? Pontocerebellar. Then go to inferior peduncle. In inferior peduncle, you can write VOR, VOR. Vestibulo-olivary reticular. Both ways. Vestibulo-cerebellar, olivary-cerebellar, reticulo-cerebellar, cerebello-vestibular, cerebello-olivary, cerebello-reticular. These are the only three efferents. So we are done with these efferents. Now afferents you have to add here. One most important, posterior spinocerebellar goes from, there are two spinocerebellar, posterior and anterior. Posterior goes from inferior cerebellar peduncle, anterior goes from, Dr. Rock, anterior goes from superior cerebellar peduncle. Now इधर और थोड़ा सा नीचे लाइन है, जैसे कि cuneo-cerebellar, okay, cuneo-cerebellar, that is for the upper lip. Now let's go to the superior cerebellar peduncle. इसमें already we have identified one, anterior spinocerebellar, because posterior goes from inferior. Tectocerebellum, because सामने midbrain है, midbrain के posterior part को tectum बोलते हैं, tectocerebellum. आगे क्या है? midbrain में क्या है? red nucleus, so cerebello-rubral. Then above it goes dentatothalamic, goes to centers above. See, if thalamus is above brainstem, so logically if anything has to go to brainstem, it will pass through superior. Then cerebello-reticular. Some descending fibers are also there. Okay, so this is grossly how you can write the three cerebellar peduncles. Thank you. हाँ ठीक है ना. सचिन सर, आपल्याला ना इन्स्टामार्टवरनं किंवा कशावरनं तरी आता फक्त आणि फक्त इथं येलो चॉकच चालतो व्यवस्थित, तो व्हाईट काय चालत नाही. लक्षात ठेवा, मला आठवण करा मी घे. छोटा वाला, छोटा नाही, काळा वाला, मोठा वाला सर. So now we'll talk about the layers of cerebrum first. Layers of cerebrum. There are 6 layers of cerebral cortex. I'll just tell you the introduction. Detailed lecture is following this. Uppermost layer has many nerve fibers, so it is called plexiform. Okay. Then there is outer granular. Then outer pyramidal. There are pyramidal cells here, granule cells here. Then there is inner granular, granule cells here. Okay. Then there are giant pyramidal cells. The inner pyramidal is also called as giant pyramidal. Okay. This is outer pyramidal. Inner pyramidal is called giant pyramidal. And then there are multiple cells over there. There is horizontal cells of Kayal and fusiform cells. They are all seen here, and that is called as pleomorphic. Pleomorphic means multiple layers are there. Multiple cells are found here. Okay. So, how do you remember this? आप लोग MBBS में आते हो तो क्या बोलते हो? मेरे को PG करने का, PG.
पीजी क्या करने का, पीजी, फिर वो नहीं वो काम करता है कुछ भी, फिर आप क्या करते हैं, जीपी, पीजी, पीजी, जीपी। फ्लेक्सिफॉर्म ग्रैन्युलर, अभी मैं बोलूंगा आप नाम बोलोगे सेल का, लेयर का। पीजी फ्लेक्सिफॉर्म है, आउटर ग्रैन्युलर, पीजी आउटर पिरामिडल है, जीपी जाइंट पिरामिडल है, प्लियोमॉर्फिक। सो दीज आर द 6 लेयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बंद कर आणि तू लिही, मी थांबतो तुझ्यासाठी। जो भी वीडियो शूटिंग करता है उसको आई ऑनर दैट। So what the 6 layers of cerebral cortex, detailed connection, there are horizontal lines, all that will be taught to you in histology class which is following this. Now, after Shalva tells us, we will start the next, and that is cerebellum. Cerebellum. नाही नाही तुझं होऊ दे, मनापासून बोल, नक्की, शुअर. So this is cerebellar cortex. This is cerebellar medulla. Cerebellar cortex, cerebellar medulla. नंतर ह्याचं घ्यायचं आपण, टॉपिक कंप्लीट करून हे घेऊ हा, कॉर्टेक्स अँड मेडुला. In the medulla are our 4 nuclei. Why girls? I don't want to be gender biased. Fact. People or fat girls eat. What do they eat? ढोकला. ढोकला खा के कोई फैट नहीं होता है. Oh, that is mnemonic been used for many years. Fastigial globus emboliformis dead. Okay. The cerebellar cortex is divided into 3 parts. सबसे बीच में there are cells called as Purkinje cells. So there is a 3-layered cortex. Cerebral cortex was 6 layer. What was that? PG, PG, GP. GP इतना जोर से नहीं बोलने का, ऊपर वाले ने सुन लिया ना, फिर GP करना पड़ेगा, जोर से चिल्लाएंगे. कैसे चिल्लाने का? PG, PG, GP. जनरल प्रैक्टिशनर जिसको पीजी नहीं मिलता है वो क्या ख्याल है? Purkinje cells that send their dendrites, they send their dendrites up. ये सबसे सिंपलेस्ट कनेक्शन बता रहा हूँ मैं. Send their dendrites up. They send their axons down to the deep cerebellum nuclei which is there in the medulla. मैंने आपको बताया. Originally gray matter was here. That migrated up. Some remained, didn't migrate. Those who didn't migrate, in case of cerebellum, they became deep cerebellum nuclei, and those who didn't migrate in cerebrum, काम बोलू नको. दिल्ली बॉयज खड़े रहो. तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सही सुना क्या? हे युधिष्ठिर, क्या आप बता सकते हैं? क्या पूछा था मैंने? सेरिब्रल न्यूक्लियाई माइग्रेट. हाँ, अरे उसको युधिष्ठिर इधर देखो. ठीक है, तुम बाहर आ जाओ. आप हस्तिनापुर से? दिल्ली का दूसरा नाम हस्तिनापुर. So that the gray matter which does not migrate, in case of cerebrum, what does it form? तुम भी दिल्ली से, दूसरा दिल्ली से कौन? बॉयज
उतना एक ही, और बाकी चारों को किधर छोड़ा? अर्जुन, नकुल, सहदेव। थैंक यू युधिष्ठिर। दोज आर कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लिया। Look here beta, basal nuclei. Okay, you have to remember this. The gray matter which is there inside the cerebrum, the nuclei inside the cerebrum are basal nuclei. Okay, ये ऐसा सब करते हैं ना एक्सरसाइज, आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। युधिष्ठिर, you will remember it. And basal nucleus, caudate nucleus, lentiform nucleus, basically. Okay. समझा? एंड यहाँ पे एंड होते हैं और यहाँ से सेरेबेलर आउटपुट निकलता है। तो सेरेबेलर आउटपुट इज फ्रॉम axons of deep cerebellar nuclei. That forms the cerebellar output. अभी हम इनपुट की तरफ जाएंगे। There are 3 layers: granule, Purkinje and molecular. 3 layers कौन से हैं? ग्रैन्यूल लेयर, Purkinje लेयर एंड मॉलिक्यूलर लेयर. नाउ आई एम गोइंग लिटिल फास्ट. जो हमारा ग्रैन्यूल लेयर है, मॉलिक्यूलर लेयर है, उसमें देयर आर बास्केट सेल्स एंड देयर आर स्टीलेट सेल्स. ये कुछ नहीं, बास्केट सेल्स एंड स्टीलेट सेल्स. बास्केट एंड स्टीलेट. ओके. ग्रैन्यूल सेल्स में, ग्रैन्यूल लेयर में, एज नेम सजेस्ट, देयर आर ग्रैन्यूल सेल्स. There are granule cells and Tanishka and Golgi cells. Golgi cells. Okay. And Golgi cells. Granule cell का axon comes, sorry, dendrite comes. Golgi cell का axon comes here. Okay. Granule cell का axon goes up and forms fibers. It forms fibers inside the molecular layer, and those fibers are called as parallel fibers. Parallel fibers. So granule का dendrite इधर जाता है, axon ऊपर जाता है, parallel fibers form करता है. Golgi का axon ही इधर आता है. Okay. Now we will talk about cerebellar input. Cerebellar input, I am going to repeat this in the last 5 minutes again. 3 minutes, 3 minutes, real 3 minutes का रहता है. So don't worry. घड्याळाकडे बघू नकोस. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कहाँ से हो? मुंबई. So cerebellar input is from 2 types of fibers. One coming from inferior olivary nucleus. Inferior olivary nucleus. These fibers, they come in. They go up and they climb over the Purkinje dendrites. They climb, therefore they are called as climbing fibers. So olivocerebellar fibers are called as climbing fibers. They go and they climb over Purkinje dendrite. Faisal, they climb over Purkinje का dendrite. Purkinje का axon कहाँ जाता है? Deep cerebellum. बाकी के सारे जो पेडंकल में आपने देखे ना एफरेंट फाइबर्स, दिस इज क्लाइंबिंग. ओके. आप जब चिंटू छोटे थे तो आपने आपके मदर ऐसी खड़ी है, उसके ऊपर क्लाइंबिंग किया है क्या? क्लाइंबिंग. या वो खड़ी तो आपने जंप मारा पीछे से, जब चिंटू थे, मार भी खाया रहेगा उसके लिए, सडनली जंप मारा. माय, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, माय मरो पण. शपथ, किसने पास किया तुमको मराठी? एक तरी एक आणि तरी कोणीतरी माय मरो कोण शपथ उभा राहा. माय मरो
मावशी जगो. काय नाव तुझं? हा, रत्नदीप. क्या बात है. पूर्ण भाजपला हॉस्टेल टाळ्या वाजवतोय. रत्नदीप, थँक्यू. पहिल्यांदा ऐकलं. काय शाळेचं नाव काय तुझं? कोण होते मराठीचे टीचर? जर्मन शिकली का? माय मरो मावशी जगो. सप्रे, काय उपयोग तुमचा विलेपार्लेमध्ये राहून? अजून कोण विलेपार्ले? ईस्ट मिनी पुणे. ड्रामा इसलिए कर रहा हूँ. द ऑल रिमेनिंग फाइबर्स आर कॉल्ड एज मॉसी फाइबर्स. मावशी नहीं, मौसी. मेरी मौसी. युधिष्ठिर उधर आप मौसी मौसी बोले थे ना, मराठी में मावशी. मौसी, मौसी fibers. What mossy fibers do is they go here and they form a synapse. They form a synapse with Golgi axon with granule dendrite. And this synapse, बलशेटवा एवढं असं जागा का राहत आहे? इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस हे ट्रिब्यून आहे. ग्लोमेरुलस. दिस सायनॅप्स इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विथ गॉल्जी, ग्रॅन्यूल अँड मावसी. मावसी. माय मरो मावसी. Who's Mausi? Who's my inferior alveoli? Mausi, all remaining. All remaining. आपके सिंगल alveoli fibers का है? All remaining afferent. जो हमने चार्ट बनाया था ना, उसमें ऑलिवोसेरेबेलर आर क्लाइंबिंग, और बाकी ऊपर से नीचे जो बचे कुचे सब थे और मौसी. मौसी. अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, एक एक बच्चा. मौसी बीसी का कंसेप्ट ही जाने वाला है थोड़े दिन के बाद. हम लोग यार 5 मौसी थे मेरे को, 2 मामा. ओके. मैं सेंटिमेंटल हो गया थोड़ा सा. मेरा शाम को आज हमारे सारे मौसी मामा के लोगों का गेट टुगेदर है सोलापुर में, और हमारा लीव्स इन व्यू ऑफ बीएमसी इलेक्शन सारा लीव्स ही कैंसिल कर दिया. मैं अभी भी फ्लाइट से जाने को सोच रहा हूँ, बट वो फ्लाइट 1:30 बजे विशाल नहीं पकड़ सकता. मैं 12 बजे छूटेगा. मैं 1:30 बजे को 40 मिनट्स लगता है नीचे से एक्वा लाइन से. T1 नहीं ना, आधा घंटा. 12:30 1:15 का फ्लाइट है. डोर्स विल क्लोज एट 1. जल्दी नहीं, मेरे 12 बजे पंच करना ही पड़ता है. 4 आवर्स ड्यूटी देता है. 8 o'clock पंच, देन 12. सर, परकिंजे सेल्स के जो डेंड्राइट्स रहते हैं उनका कोई पैरेलल फाइबर से रिलेशन? हाँ, पर पैरेलल फाइबर्स के साथ उनका कनेक्शन होता है. इसके लिए वो पैरेलल जाते थे. इन्फ्लुएंस द परकिंजे. पैरेलल भी वो टर्मिनेट? हाँ, टर्मिनेट नहीं होते हैं. साइनेप्सेस उनके होते हैं. दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. ओके. सो दैट्स अबाउट सेरेबेलम. काम जरा से. I'm going to explain the circuit again to you. But before that, the last thing, the blood supply of cerebellum is from superior cerebellar artery, inferior cerebellum, anterior inferior and posterior inferior. Ica and pica. Pica. Ica and pica. Anterior inferior cerebellar and posterior. इसमें से कुछ भी डैमेज लगा तो देर cerebellum is damaged. When cerebellum is damaged, there is Ramit, sorry. I don't want to disturb you. असं ठेवून चालू कर. That is skill. Chalo, start. So coming to disorders of cerebellum and what happens when the cerebellum is damaged. One,
डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स इनटू सिंपल। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, आप रास्ते पे चलते हो, फिर आप इधर जाओगे, घर पे जाओगे, रिमोट चालू करोगे, तो ऐसा सब नहीं होगा। देन यू विल बी ऐसा, हाँ। सो जो स्टाइल आपका पूरा चला जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स इनटू सिंपल। डिसमेट्रिया, डिसमेट्रिया, आपके यहाँ पे जाके हाथ रुकना चाहिए था, वो आगे चला जाता है। शादी में आप गार्लैंड डालने वाले हैं बहू को, आपके बहू, उसकी बहन बाजू में खड़ी, आपका जो मन में होता है वो सही में हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसमेट्रिया। ये लगा हंसते ओके। देन डिफेक्टिव गेट, डिफेक्टिव गेट, डिफेक्टिव गेट इज स्टैगरिंग गेट। स्टैगर्स हमने आपको दिखाया ऑलरेडी, वाइड दिस थिंग, स्टैगरिंग गेट। ओके। cerebellum person staggers like this, drunkard person staggers like this. Okay, staggering gait. Defective gait, defective speech, scanning speech, that is called as scanning. He speaks in a scanning way. Okay. Then there is cerebellar nystagmus. तो 4 D तो हो गए इधर, and most importantly dysdiadochokinesia. Don't ask me the spelling. Dysdiadochokinesia. नमक हलाल किसने देखा? कच्चा पापड़ पक्का, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अल्टरनेटिव मूवमेंट द पर्सन इज नॉट एबल टू, ऐसा करो ऐसा करो, बोले नहीं होगा। नॉट एबल टू परफॉर्म रिपीटेटिव मूवमेंट्स। अपने बचपन में किया कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो अमिताभ बच्चन ओरिजिनल। ओके। सेरेबेलर निस्टैग्मस है, आप आँख हिलता रहता है। ओके। देन इंटेंशन ट्रेमर्स एंड पास्ट पॉइंटिंग, not able to point in a particular direction. Past pointing, आप बोलेंगे इधर ऐसा हाथ नहीं लगा पाएगा, इधर पॉइंट करो नहीं कर पाएगा। Cerebral nystagmus, the eyeball will keep on moving, cerebral nystagmus. Intention tremor, कुछ भी काम करने को बोला तो ट्रेमर हो जाता है। आप कैसे इधर ऐसे मस्ती बिस्ती करते, फिर सडनली हम इधर आपको अरे इधर आज सीखा अभी सेमिनार में आपको समझेगा सर इंटेंशन ट्रेमर्स क्या होता है। ओके। 5 Ds, dysdiadochokinesia, dysmetria, sorry, decomposition of complex movements into simple. Dysmetria, going beyond the point where you have to stop. Defective gait, defective speech, cerebellar nystagmus, then intention tremor, and then past pointing. Thank you. Okay. आता now I'm revising. अरे असं डोक्याला हात नको दो, तूच हाँ, वो सोच रहे 1 घंटे में कितना सिखाएगी। है ना। 3, 2, 1. So now we are discussing the intracerebellar connections. The cerebellar input, firstly the cerebellum has medulla, cortex. In the medulla are F, G, E, D, the 4 fastigial, globus, umbiliform, dentate. These are the 4 nuclei which are there in the medulla, and the grey matter here is forming the cortex, which is divided into 3 parts. Molecular layer which has granule cells and which has basket cells and stellate cells, and the granule layer which has granule cells and Golgi cells, and in between is Purkinje cells. Purkinje cells send their dendrites above, they send their axons below to the deep cerebellar nuclei. From the deep cerebellar nuclei the axons arise that contribute to the cerebellar output. Now what about cerebellar input? Cerebellar input is via 2 fibers, olivary fibers coming from inferior alveolar nucleus, olivary cerebellum. They climb up the Purkinje dendrite and therefore they call climbing fibers. All remaining afferent fibers in cerebellum are called as lossy fibers. They go here, they form a glomerulus. Glomerulus with the axon of Golgi and dendrite of granule.
Axon of granule goes to the molecular layer and forms parallel fibers. Forms the parallel fibers, which again influences the dendrites of Purkinje. So that's about the cerebellar connection. I normally tell at least these 5 lines you should be able to write in case of intracerebellar connection. 1. The input of the cerebellum is from the inferior olivary nucleus as climbing fibers and remaining are mossy fibers. Purkinje send their dendrites above in the molecular layer and axons to the deep cerebellar nuclei, and from there starts the cerebellar output. Granule cells over here, they send their dendrites which synapse with mossy fibers and Golgi, and their axon goes and forms parallel fibers. So parallel fibers from granule cells, climbing fibers from olivary. So that's about the intracerebellar connections. Thank you. कुठं नुकसान नाही ना झालं.